Hi, good evening, Manas. Good evening, everyone. Let's wait couple of minutes for others to join in. फिर हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे. लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या देख लिया था? आई थिंक 18 जुलाई को हम लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिस्कशन स्टार्ट किया था. राइट. डाल्टन्स थ्योरी, ओके, कैथोड रे ट्यूब, मॉडिफिकेशंस एंड राइट, जे थॉमसन्स टेक्निक. ठीक है. सो इन द मीन टाइम बाकी लोग ज्वाइन कर रहे हैं. आप लोग ये मॉडिफिकेशंस वाला वीडियो देख सकते हो. आई विल जस्ट क्विकली शेयर दिस ओवर द चैट. हम लोगों ने लास्ट क्लास में इसका डिस्कशन किया था. ये देखो, आई हैव शेयर्ड इट ऑन द chat itself. You can spare some time to watch this video which talks about the modifications. Last wala part chhod dena. Last wala part talks about x-rays and all. That is not something which we are going into the details of right now. Yes, Subodh, it will be. आस्था, ये सब माल्टेज क्रॉस ट्यूब या फिर क्रुक्स ट्यूब, विलियम्स ट्यूब, ये सब क्या है? मतलब based on the name of the scientist or based on the modification done in the experiment, उसके हिसाब से. It has nothing of a scientific significance. तो द ऑब्जेक्ट विच वाज प्लेस्ड, हम लोगों ने देखा था ना, लास्ट क्लास में बात करी थी, मतलब लास्ट से एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले क्लास में, दैट शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट वाज देयर. तो शैडो ऑफ द ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट क्या है? एक क्रॉस है जिसको डाल दिया है.
I know Romil, बेचारा टेडी. नहीं सुबोल, ये वाला सेटअप घर पे कर पाना थोड़ा मुश्किल है. इतना हाई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आपको डीसी जनरेटर लगेगा. Great. Now I think most of the students have joined in. We can begin today's discussion, right? So as I was saying in the last class, हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स एंड उनके डिस्कवरी के बारे में बात कर रहे थे, इन विच आवर फोकस वाज ऑन इलेक्ट्रॉन. एंड in last class we understood about cathode ray tube experiment, cathode ray tube particles, and J.J. Thomson's important result about Q by M, charge by mass ratio of the cathode ray particles. Now इलेक्ट्रॉन्स में थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन को लेकर थोड़ा सा और इंफॉर्मेशन है which I would like you to understand via Robert Millikan, or Millikan's oil drop experiment. Now this is something which helped in finding out charge of electron. Okay, so just as an interesting add-on to our knowledge base, I am going to talk about the experiment setup, and will not get into the mathematical calculations of it, but will get an idea of how Millikan was able to determine the charge of an electron. So यहाँ पर आप notice करना experimental setup किस तरीके से है. I have a good diagram to talk about it. Let me take that diagram over here. ठीक है, simplified version है. So focus करना यहाँ पर, there is this vessel. ठीक है, in this vessel there is a provision to sprinkle oil droplets. ठीक है, through this vaporizer, you can say there is provision to put in oil droplets. ठीक है, now there is also a provision, यहाँ पर mention नहीं कर रखा है, but there is a provision to introduce X-rays inside the vessel, inside this chamber. Then these rays are made to pass through an electric field. ठीक है, so there is this setup in which यहाँ पर एक bottom में plate है. ठीक है, उस plate में perforations हैं so that the oil droplet can pass through. ठीक है, and there is a microscope to view the motion of these oil droplets. ठीक है, तो ये setup है हमारा. Now what happens is that because of the X-rays passed, ठीक है, what these X-rays do is, these X-rays, these are high energy radiations. These ionize the gas present inside. Okay, they ionize the gas present inside by ejecting
electrons out of gas atoms or molecules, whichever there are. ठीक है? Now, what happens as a result of this, that these oil particles, ठीक है, these oil droplets, they become charged because of these ions or electrons present inside the vessel. ठीक है? The oil droplets become charged by attaching with these ions or electrons present inside the chamber. Now, in order to understand the charge on these oil droplets, ठीक है, to calculate charge on these oil droplets, a force on or you can say uniform electric field is applied. ठीक है? Now this field, what it does is, यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना किसी भी एक ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर जिसका चार्ज से क्यू रहेगा, अब इसके ऊपर फोर्स लगेगा, एक तो ग्रेविटेशन का फोर्स रहेगा गोइंग डाउनवर्ड्स, ठीक है? देन डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ चार्ज इज देयर ऑन द ऑयल ड्रॉपलेट, देयर कुड बी एन इलेक्ट्रिकल फोर्स एक्टिंग आइदर इन डाउन और अप डायरेक्शन, डिपेंडिंग अपॉन किस तरीके का चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट ने अक्वायर किया है. It could be positive or negative, but in case when it is when the charge or the nature of charge in such a manner that the electrical force in the upward direction, the forces may balance. ठीक है? A balance of force is possible for few droplets. ठीक है? And these will be the droplets that will be then observed. ठीक है? These droplets are the observed ones. ठीक है? बाकी जो ड्रॉप करती रहेंगी काफी, they will be quite slow. These balance of forces will result in either very slow or you can say almost zero speed. ठीक है? Of these oil droplets, these will be the observed oil droplets by Millikan to do the calculation of charge of the oil droplet. ठीक है? तो इसको बेटर एक्सप्लेन करने के लिए let me help you understand one more video. So there is this simulation. ठीक है? Let me again share this link with everyone. How do I copy? Control C. Okay. Let me share this video ka link. So it is a simulation. Now this is not an actual experiment. जैसे मैंने कैथोड रे का तो क्या आपको actual experiment बताया था. This is a simulation. तो आप लोगों को ये लिंक मिला है सबको चैट पर, तो आप लोग ये लिंक को क्लिक करो एंड
see what is happening in this experimental setup. ठीक है, एक बार आप लोग देखो फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं. राइट, सो आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा. सो जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्रॉल था, ठीक है, दैट इज एक्चुअली द पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, ये जो यहाँ पर लिखा है ना ऐसे सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है दिस कैन बी एडजस्टेड. ठीक है, so as part of that simulation what is being talked about is that when the oil droplets are falling down, they can either made to accelerate or they can also get deaccelerated depending upon the direction in which the force is acting. ठीक है, now by doing modifications to this potential we can get some droplets. ठीक है, ये तो सिमुलेशन था. ठीक है, in real life there will be a very large sample of oil droplets that will be coming down. सबका साइज सेम होना जरूरी नहीं है, साइज अलग अलग हो सकता है, सबके ऊपर चार्ज अलग अलग हो सकता है. so what we are going to do is as part of adjusting the potential, some of the droplets, ठीक है, they might find a balance of force acting on them and as a result their speed will become very slow or you can say almost zero. ठीक है, एक्चुअली में यहाँ पर अगर डिटेल्ड कैलकुलेशंस में जाते हैं, ठीक है, तो देयर इज ड्रैग फोर्स आल्सो. ठीक है, द फोर्स बिकॉज ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड. बट ठीक है, हम लोगों को कैलकुलेशन में जाने की जरूरत नहीं है अभी. तो what is important is that some of these oil droplets, they experience a balance of force primarily because of the potential difference that was applied. ठीक है, and on these particular droplets, ठीक है, on the ones which were observed, ठीक है, Millikan does the calculation. ठीक है, अब कैलकुलेशंस क्या थी वो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. बेस्ड ऑन calculations done on these drops, what happened was Millikan arrived at a very very important observation that charge on the oil droplet was always coming out as a multiple, or you can say roughly with slight experimental errors coming out to be always a multiple of, ठीक है, and मैं मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहा हूँ, 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. ठीक है, the charge on the oil droplets was always coming out as a multiple of it. So n could be 1, 2, 3, so on so forth. So this observation, ठीक है, this observation by Millikan is called as observation of quantization of charge. ठीक है, ध्यान से ऑब्जर्व करना. What do we call this? Or what Millikan concluded is that charge
is quantized. What does this term mean? Charge is quantized. So what it means is that charge exists in form of discrete units. Okay, charge exists as multiple of a smallest unit and not a continuous quantity. Okay, so what I mean to say is that charge is something, ठीक है, 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम मिलेगा, 2 times 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम मिलेगा, 3 times 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम मिलेगा, and so on so forth, but not something like 3.5 into 1.6 into 10 की power minus 19 कूलम. ये नहीं होगा, ठीक है. It exists as a multiple only. It is not something which is continuous. So you will not have charge between 1.6 and 3.2 into 10 की power minus 19 कूलम. यहाँ मिलेगा, बीच में नहीं मिलेगा. So this is something which came out as a very important observation. And this smallest unit of charge that you can see was assigned as the fundamental charge and assigned as the charge of electron. Okay, so this smallest unit of charge was assigned as the charge of electron. Now this gives you the idea of the important data points regarding the electron. तो यहाँ पर आप observe करना. Let me just quickly bring out those points and the values that you need to remember. So ध्यान रखना, charge upon mass ratio of an electron was 1.76 into 10 raised to the power of 11 coulomb per kg. ठीक है. We have found out that the magnitude of the charge of an electron is 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb. And as a result, mass of electron, if you substitute this value, you will get this to be 9.1 into 10 raised to the power of minus 31 kg. So these are some things to remember by. आगे फ्यूचर में कई बार ये कैलकुलेशन में आ सकते हैं. ठीक है. Of course, electron का charge is negative, so I have just taken the magnitude here. Now, is this something clear with everyone? The important observation that comes from Millikan's experiment is the fact that charge is quantized. That is the most important observation. ठीक है. Now, so these are some of the important highlights about the electron. Let me quickly move on to the highlights associated with the proton as well. Okay, now proton, as I said again last time, that proton was not something that got discovered and named proton right after. It was actually anode rays. Okay, anode rays which got discovered via modifications in CRT experiment. Now, this is something that I had spoken about in the last class also, and let me use this diagram only to talk about it. ठीक है, ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा भी था. Now, this is the same cathode ray tube experiment setup. I'll just point out a couple of things. This side you have cathode,
ठीक है, ये जो टॉप में यहाँ पर है ये आपका कैथोड रहेगा एंड दिस कैथोड इज परफोरेटेड. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय परफोरेटेड? That there are holes present inside it through which electrons can or not electrons, these gaseous ions can pass through. ठीक है, and these, the pink glow is your anode rays. These are positively charged gaseous ions. ठीक है, ध्यान रखना, these are not protons. There is a very common misconception in among students that that anode rays are made up of protons. No, anode rays are actually made up of positively charged gaseous ions. ये मैंने आपको last class में explain करा था depth में, तो I am not going into those details again. ठीक है, and the thing was that this charge by mass ratio, Q by M ratio of these anode particles depends on type of gas. ठीक है, and this was something which was coming maximum for the lightest gas, right? किस गैस के लिए ये Q by M का वैल्यू मैक्सिमम आएगा? It came maximum for hydrogen gas. ठीक है, and that is where the gaseous ion, ठीक है, associated, the ion associated with H2 gas, H plus ion, ठीक है, H plus ion was assigned the fundamental positive charge present in an atom. ठीक है, this was actually something which was more of a extrapolation, you can say, that came post this experiment that हम लोगों ने कैथोड रेज स्टडी करे, मॉडिफिकेशंस करे, एंड वही सेट ऑफ मॉडिफिकेशन एनोड रेज पे भी अप्लाई करे. ठीक है, it was found to deflect a light paddle wheel. It was found to deflect under the influence of an external electrical and magnetic field. तो वो सब चीजें ऑब्जर्व हुई. ठीक है, एंड उससे कुछ कंक्लूजन्स भी समझ में आए that these anode rays are actually made up of certain particles which are positively charged. ठीक है, because of the kind of deflection that was shown, and amongst different gases that were used, the Q by M value was coming out to be different. Why? Because of the fact that these particles were gaseous ions only. तो different gas का different ions रहेगा. And इसमें जो सबसे ज़्यादा Q by M value वाला था, ठीक है, the one with the lightest gas particle was that of H2, and that is what H2 was assigned, or H plus was assigned as the fundamental positive charge present inside the atom. ठीक है, the term proton was not coined yet. ठीक है, the term proton was coined much later by Rutherford. The term proton was coined much later by Rutherford as part of his model of atom. अभी तो इनका क्या नाम था? एनोड रे पार्टिकल्स, राइट? एंड इनके बारे में क्या क्या ऑब्जर्वेशन बाद में आई. ठीक है, इसके बारे में ये हमें समझ में आया दैट चार्ज ऑफ प्रोटॉन was
plus 1.6 into 10 raised to the power of minus 19 coulomb, and mass of proton. Okay, this was also determined much later using experimental techniques, that it was 1.67 into 10 raised to the power of minus 24 grams, or you can say minus 27 kilograms. So these are also some things which you should remember for a proton. Okay. So these earlier experiments that were conducted by the scientists, they helped understand, that atom is not indivisible. In fact, inside the atom, there are certain positively and negatively charged particles that are present. And by doing these experiments, by doing this cathode ray tube experiment setup, we were able to separate these positive and negative charged particles that were present inside the atom and study them separately. Now, the natural question, the next logical question that came into the minds of the scientists at that point in time was that how are these positive and negatively charged particles present inside the atom? What is the structure of atom? Right. So this is what something led to the next topic of discussion, which is different models of atom that were proposed by the scientists. Models of atom, or you can say structure of atom. Now, in this, one of the first ones that you would have studied again in your junior classes is Thomson's plum pudding model. ठीक है, plum pudding बोलते हैं या watermelon model बोलते हैं. Now, interestingly, this was a model that did not have much experimental evidence behind this. It was hypothesized by J.J. Thomson. Now, J.J. Thomson उस time पे he was a big shot with all his techniques of mass spectrometry and all this research into the field of electricity and magnetism. तो कैसा होता है that any person of this stature, if he presents an idea that is not rejected right away by the scientific community, it was paid heed to, and it became part of actually the scientific community started using it to describe the structure of atom. Now, आप लोगों को already पता है, but मैं still एक बार के लिए इसके ऊपर दो लाइनें लिख देता हूँ. That what Thomson proposed was that atom is a uniform sphere of positive charge with electrons, the negatively charged particles. ठीक है, or I should say यहाँ पर let me use couple of more words to make it more relatable when I will show you a simulation. So atom is a uniform sphere of diffused positive charge. Diffused का मतलब होगा ऐसे फैला हुआ, like a cloud is a diffused form of water. ठीक है, water vapor. So you have a diffused positively charged spread throughout in a spherical manner, ठीक है, with electrons, ठीक है, embedded randomly. Just a second.
एक मिनट गाइस. Right, so uniform positively charged sphere with electron embedded randomly inside it. ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे negatively charged right, similar to what watermelon with seeds would be. So it is also called as watermelon model. Now the thing is that this was soon discarded, ठीक है, by Rutherford's gold foil scattering experiment. Now, what I would want you to understand about Rutherford's gold foil scattering experiment is via a more interactive simulation. So let me also find the link for this, and let me share with everyone. ठीक है, आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ ही है, तो आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग. Oh नहीं, my bad. That is not the link. Let me find another link. आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर? और नहीं तो I can. Yep. Wait a minute. I got the link. I'll share the link with everyone now. नहीं, मैं दिखाऊंगा तो क्या थोड़ा सा lag आएगा. So that is why I'm sharing this link with everyone. It's a simulation. ठीक है. अगर आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है. आप लोग यहाँ पर ऑब्जर्व करो किस तरीके से ये वर्क करेगा. So let me first click on the plum pudding model. ठीक है, there are two models that are there. There is Rutherford and there is plum pudding. तो plum pudding model में कैसा है that ऐसे positive charge diffused present है and electrons इसमें randomly embedded है. ठीक है. Now if you remember what Rutherford's model was, Rutherford model में और Rutherford's experiment में क्या था that we ऐसे project alpha particles, ठीक है, through a thin sheet of gold foil. ठीक है. And if Rutherford or sorry, if Thomson was right, then all these alpha particles should have gone straight through without any deflection. Okay, so let me talk about, पहले मैं एक बार simplified form में आपको एक gold foil scattering experiment का setup याद दिला देता हूँ. So there was this source of alpha particle. ठीक है, अल्फा पार्टिकल क्या होता है? अल्फा पार्टिकल is 2 protons and 2 neutrons combined. ठीक है. So there is this source of alpha particle. यहाँ से ऐसे streamlined manner में alpha particles are coming in, and there is a very thin, extremely thin gold foil. And behind this thin gold foil, there is a detector screen, ZNS coated detector screen, which will help
identify or which will help find out where these alpha particles are striking. ठीक है. Now यहाँ पर आप observe करना. हाँ, so definitely you will have multiple questions regarding this, that what was the reason behind using alpha particles. Well, alpha particles were kind of optimal in terms of the observations that were supposed to be made. ठीक है, वो इतने बड़े भी नहीं थे कि एटम्स ये गोल्ड फॉइल के थ्रू पास ही नहीं कर पाए. ठीक है, और इतने छोटे भी नहीं थे दैट दे आर नॉट डिटेक्टेबल. ठीक है, सो दे बिकेम a good option for understanding about the structure of atom. So what this simulation is talking about, is, if plum pudding model was correct, then all the alpha particles should have gone straight through without any deflection. Why? Because according to Thomson, the model of the atom was something which was based on a diffuse charge, right? So, for example, you have a cloud, right? And this cloud ke through you throw some particles. So what will happen is that because the cloud is diffused in nature, it is not going to deflect the particles. It is just going to let them pass through. However, what the observations came were quite different. So the observations that came were threefold. Okay, the first observation that came was that yes, most of the particles are actually going straight without any deflection. Okay, most of the particles were going straight only. Then there was a second observation, which was that some particles did deflect by a small angle. Okay. And there was another observation which talked about that some particles got deflected by a large angle. Okay. They kind of came back more than 90-degree के angle से deflect हो गए. So these observations were something which immediately contradicted the plum pudding model. ठीक है. So यहाँ पर observe करना. Let me write it down here. Let me write down the observations and the associated conclusions which Rutherford made based on this setup. So as you can see, there are three important observations. The first observation is that most, ठीक है, most मतलब 99% से भी ज़्यादा, ठीक है, 99% or more alpha particles went straight through without any deflection. Okay. So the conclusion based on which Rutherford gave, यहाँ पर observe करना, that most of the atom is empty. That was the conclusion from Rutherford, saying that most of the atom is empty, and these particles, these alpha particles, they are just going straight through without any deflection. Okay. Now few, okay, or you can say some, okay, less than 1%, very very small value, less than 1% alpha particles
deflected by a small angle. ठीक है, a very small angle. This is the second observation, as I am highlighting, that there was some deflection. Now, what he concluded was that inside atom, there is a tiny region. ठीक है, inside atom, there is a tiny. Why did it say tiny? Because most of the particles were going through, were going straight. Only very small portion suffered deflection. Okay, so inside the atom there is a tiny region, okay, called nucleus. Okay, there is a tiny region. उसी ने नाम दिया. He only coined the term nucleus. ठीक है, एंड स्टार्टिंग में तो देखो रदरफोर्ड ये भी कंक्लूड नहीं कर पाया था दैट इट इज पॉजिटिवली चार्ज्ड. ठीक है, he had no basis of concluding it as a positively charged region. बाद में it was his inspiration from the model of solar system that सेंटर में जैसे सन प्रेजेंट होता है उसके अराउंड प्लैनेट्स रहते हैं, वैसे ही सेंटर में न्यूक्लियस रहेगा positively charged and uske around negatively charged electrons are going to be revolving. Okay, so inside the atom there is a tiny region called nucleus. Okay, which abhi ke liye main likh raha hu that it is positively charged, that deflected alpha particles passing near it. Okay, that deflected alpha particles passing near it. So this is something now you can see in the simulation. Let me take you back to the simulation, and this time let me take the Rutherford's atom. Okay, so now let's say I'm going to click on this button and start with the alpha particles, and let me put in the tracers also. So you can see, ठीक है, यहाँ पर तो कैसा है, यहाँ पर आपको काफी ऐसे zoomed in version दिखाया जा रहा है एटम का, but in real life the size of the nucleus is much small as compared to that of the atom. You might have heard it in your junior classes that you can imagine the size of atom to be like a football field and the size of nucleus to be the football inside. इतना होता है. ठीक है, यहाँ पर तो ये फिर भी आपको थोड़ा बड़ा दिखाया गया है, अदरवाइज न्यूक्लियस इससे भी बहुत छोटा होता है. ठीक है, so you imagine the football field and football का ratio. तो यहाँ पर क्या होगा, the most of the alpha particles which are not going nearby, as you can see the alpha particles which are not going nearby the nucleus, they go without any deflection. ठीक है, now as you can see the alpha particles which come closer to the nucleus, ठीक है, they are deflecting. Sometimes if a particle it kind of comes almost in line, you can see some alpha particles going almost backwards also. Okay, some alpha particles which come very like head-on collision with nucleus, they might even suffer a very large deflection. Okay, so यहाँ पर the third observation that came was that few alpha particles, ठीक है, few मतलब very less, मतलब I don't even remember the proportion of it, but it will be something even less than 0.1%. ठीक है, much lesser than that. So few alpha particles deflected by a large angle.
ठीक है, few alpha particles, they were deflected by a large angle. Now as a result, इसके लिए क्या कंक्लूजन यहाँ पर ड्रॉ किया रदरफोर्ड ने? The conclusion that Rutherford had was that this nucleus, ठीक है, this tiny positively charged nucleus is, or you can say is something that contributes to almost the entire mass of the atom. Okay, this nucleus is quite dense and constitutes most of the mass of atom. ठीक है, largely it is empty and उसके थ्रू जब अल्फा पार्टिकल्स जा रहे हैं तो दे आर गोइंग अनडिफ्लेक्टेड, दे आर गोइंग स्ट्रेट. बट ये न्यूक्लियस के अराउंड अल्फा पार्टिकल्स अगर जा रहे हैं, ठीक है, तो दे आर सफरिंग डिफ्लेक्शंस एंड सम आर इवन सफरिंग डिफ्लेक्शंस बाय वेरी लार्ज एंगल्स. And this is what made him conclude that this nucleus is quite dense and constitutes almost the entire mass of the atom. Like you can imagine, for example, let's say you have a balloon and you have an say iron ball, okay, and now you are throwing some particles at them, right? Those particles are coming back in which case? In case when they are striking the iron and returning back. Balloon के case में क्या हो सकता है? The balloon itself gets carried away by the momentum of the alpha particles. ठीक है, तो ऐसा नहीं हो रहा था यहाँ पर. The nucleus was quite heavy and was deflecting these alpha particles by large angles. So these were the key observations and conclusions that was made by Rutherford. Now post this, as I said, the remainder information was just inspiration from the model of solar system. ठीक है, so यहाँ पर observe करना, based on these conclusions and taking inspiration from the model of solar system. Okay, so if you remember, that Rutherford model is also called as planetary model of atom. So that planetary model of atom comes because of this inspiration from solar system. Rutherford proposed okay, based on this, Rutherford proposed that nucleus is present at the center of atom and electrons revolve around it with the centrifugal force balanced by electrostatic attraction force. Right, so there is nucleus at the center and there are electrons present around it. बहुत डिफिकल्ट है यार ये. As you would notice, आज मैं actually different laptop पे काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए थोड़ा सा ड्राइंग करना डिफिकल्ट हो रहा है.
स्पेशली हाँ, मैकबुक पे काम कर रहा हूँ आज। एक्चुअली वो जो स्पेक्टर था मतलब है अभी भी, वो मेरी वाइफ का है। बट बिकॉज ऑफ certain domestic diplomacy failures, I have to revert back to my MacBook. इसमें नहीं है रे सर्किल का टूल यार, दैट्स व्हाट द प्रॉब्लम इज। मतलब माइक्रोसॉफ्ट ना मैक के लिए ये सब चीज़ें बनाता ही नहीं है। ओ हाँ, यहाँ पर है, मिला मिला, आई फाउंड इट समवेयर। कहाँ गया? अब भगवान जाने से कुछ बनेगा क्या। अरे बना। अब वो सर्कल बन रहा है कि अंडा बन रहा है, वो चीज़ तुम लोग देख लेना। अभी के लिए इतना बहुत है। राइट, सो ये पॉजिटिवली चार्ज एंड ये इलेक्ट्रॉन, एंड ये इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि नहीं होगा, आई डोंट नो, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स इज टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, एंड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, दैट इज रेडियली आउटवर्ड्स। ठीक है, now this is something which was the atom or the model of the atom as proposed by Rutherford। ठीक है, ये सिमुलेशन आप लोगों को समझ में आया? ठीक है, these observations and conclusions, all right, great. Now this is something which was a refresh from what you would have already studied in your junior classes। ठीक है, now let me add something extra to it। ठीक है, अब आप इस पे देखना जे का कैसा एक पर्सपेक्टिव रहता है। सो अभी रदरफोर्ड का मॉडल इतना सा नहीं था कि रदरफोर्ड ने इतना सा स्टडी करके छोड़ दिया था। इनफैक्ट इट वाज नॉट इवन रदरफोर्ड हु डिड द स्टडी, इट वाज रदरफोर्ड के स्टूडेंट्स Gregor and Marsden, I don't even know how to pronounce it. These two guys, they actually were PhD candidates working under Rutherford, and इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट डिजाइन एंड एग्जीक्यूट किया था। अभी पीएचडी तो क्या होते हैं, मतलब उस टाइम पे वही होता है ना, जूनियर सीनियर का हिसाब होता है। सो द क्रेडिट एक्चुअली वेंट टू रदरफोर्ड, बट द actual experiment was designed and conducted by these two guys. So let's pay some respect to them as well. And let's say I'm posing a question to you. The question is in the following manner: that they did their experimental observations and they found out certain mathematically important points. Okay. Now, don't get into the details of it कि कैसे ये इन्होंने derive करा। ठीक है, हाँ शेखर, this is also called as the same experiment। अभी I don't know how to pronounce their names, गीगर एंड मार्डन और मार्सडन, आई थिंक कुछ तो साइलेंट होगा इनमें। आई रियली डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस देयर नेम्स। सो लेट्स से आपको मैंने पैराग्राफ के फॉर्म में ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी है। ठीक है, दैट रदरफोर्ड इक्वेशन बनाया था अबाउट प्रिडिक्टिंग एस। व्हाट इज एस? एस इज द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है, दैट आर इमर्जिंग आउट ऑफ दैट प्लेट, आउट ऑफ दैट गोल्ड फॉइल। यहाँ पर देखो ये सोर्स है, दिस इज द सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यहाँ पर ये गोल्ड फॉइल है। ठीक है, एंड गोल्ड फॉइल की वजह से डिफ्लेक्शन हो रहा है अल्फा पार्टिकल्स का। ठीक है, तो अब ये बता रहा है दैट नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स emitted per minute from the scattering foil at a given angle phi, ठीक है, should be proportional to these values। ठीक है, so based on this I am asking you this question, and there can be more than one option correct to select from ABCD। ठीक है, let me kind of bring this here। Yeah,
ठीक है, ये ग्राफ जो है ये S वर्सेस T है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स वर्सेस थिकनेस while keeping other things constant. Take an attempt and let me know कि आपसे क्या बन पा रहा है. ठीक है, रट्टा मत मारना इस चीज का. This is not something which is expected from you. This is not even part of your syllabus. ये तो आप इस तरीके से मान के चलो कि लेट्स से आपको पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे दिया एंड ऑन द स्पॉट आपको उस पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का नॉलेज अक्वायर करना है एंड क्वेश्चंस को आंसर करना है. तो उसी फॉर्म में ये क्वेश्चन मैंने पुट करा है. ठीक है, हाँ अनु, मतलब व्हाट इज योर क्वेश्चन? इंक्रीज ऑफ दिस एंगल फाई. ठीक है, ये जो एंगल है फाई, इसके बारे में बोला जा रहा है. सुबोध, आपका एक आंसर सही है, एक आंसर गलत है. केदार, आपके दोनों आंसर सही हैं. गुड. आप लोगों ने मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री तो पढ़ना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपको साइन थीटा की वैल्यूज एंड कॉस थीटा की वैल्यूज ये सब तो आइडिया होंगी सही. रावी, एक आंसर सही है, एक आंसर गड़बड़ है. सेम गोज फॉर यू शेखर. श्रेया, नहीं, आपके दोनों आंसर गड़बड़ है. हाँ सुबोध, सुबोध, सानिका, रावी, राइट, करेक्ट. नहीं लक्ष्मी. शिवांक, एक सही आंसर है, एक गलत है. All right, so let me now explain. Well, the correct answer is B and C. ठीक है, B and C is the correct answer. यहाँ नीचे भी लिखा हुआ है मैंने वैसे. अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व करना कैसे. तो A एंड B में एक आंसर होगा, तो ऑब्जर्व करते हैं कौन सा करेक्ट है. तो डिफरेंट डिफरेंट एंगल पर S का वैल्यू क्या रहेगा. तो ये जो एंगल था फाई, यहाँ पर कैसा था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर गोइंग स्ट्रेट थ्रू. ठीक है, तो स्मॉलर द वैल्यू ऑफ फाई, ठीक है, मोर विल बी द पार्टिकल्स. जैसे जैसे आप एंगल बढ़ाते जा रहे हो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम होते जाएंगे.
ये तो हमें सीधे सीधे रदरफोर्ड के ऑब्जर्वेशन से ही याद आ गया। एंड इसमें भी लिखा हुआ है, इसमें आप देखोगे मैथमेटिकली भी लिखा हुआ है दैट एस, ठीक है, फ्रॉम दिस यू कैन से दैट एस इज proportional to 1 upon sin 5/2 की पावर 4, ठीक है। तो अब अगर देखो ना साइन का वैल्यू कैसा रहता है, जैसे जैसे फाइव इंक्रीज करता है, एज फाइव इंक्रीजेज 0 to 180 डिग्री, वैसे वैसे साइन फाइव और यू कैन से साइन 5/2 इंक्रीज करेगा ना। ये समझ में आया? इतना आपने मैथ्स में पढ़ा हुआ है। तो अगर डिनोमिनेटर बढ़ेगा, ठीक है, डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो एस का वैल्यू कम हो जाएगा। आप ऐसे मैथमेटिकली भी कंक्लूड कर सकते हो। एज वेल एज इफ यू रिमेंबर, most of the particles were going straight through, some were getting deflected by a small angle and very few were getting deflected by large angles। तो उससे आप बी तो कंक्लूड कर ही सकते थे, ठीक है, बी तो आपका आना ही चाहिए था, ठीक है। now what it is asking in C and D option is that instead of gold, ठीक है, instead of gold foil, let's say if I use different metal, silver, copper, aluminium, ठीक है, तो फिर मेरे स्कैटरिंग के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, व्हाट इज इट दैट आई विल बी सीइंग। तो इसमें क्या करा जा रहा है, बाकी सब चीजों को कांस्टेंट करा जा रहा है, ठीक है। द ओनली थिंग दैट इज चेंजिंग इज दिस थिकनेस ऑफ फॉइल, ठीक है, सॉरी इज द चार्ज, सॉरी इज द चार्ज ऑफ द फॉइल एटम, ठीक है। एल्यूमिनियम का एटम, इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, कॉपर का 30 होता है, सिल्वर का कितना होता है, सिल्वर का 47 या 48 होता है, ठीक है। तो उतने ही प्रोटॉन्स इनके न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे, सो दैट विल बी द चार्ज दैट इज देयर। सो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करना, मोर इज द चार्ज फॉर अ गिवन थिकनेस, लेट्स से इफ आई ड्रू अ वर्टिकल लाइन, ठीक है, फॉर अ गिवन थिकनेस, ठीक है, किसका चार्ज ज्यादा होगा, एल्यूमिनियम का, कॉपर का कि सिल्वर का? सिल्वर का चार्ज ज्यादा होगा। एंड एज यू कैन सी यहाँ पर जैसे बता रखा है दैट एस इज प्रोपोर्शनल टू द चार्ज, सो मोर द चार्ज मोर विल बी द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट विल बी स्ट्राइकिंग थ्रू। ये समझ में आया व्हाई आई चोज सी ऑप्शन? ठीक है, सो दिस वाज समथिंग ऑफ अ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ठीक है। आपसे ये न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस, इसका डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है, बिकॉज दिस इज नॉट रियली पार्ट ऑफ आवर सिलेबस टू गेट इनटू द डेरिवेशन ऑफ दिस। बट हाँ, ऐसा पैराग्राफ के फॉर्म में आपको देकर इस पे आपको चीजें पूछी जा सकती है। सो दिस इज समथिंग which talks about your comprehension ability to grasp the knowledge then and there itself and then make the conclusion, ठीक है। now based on this, now we should be able to move on to the next piece of information, which is drawbacks of Rutherford's model। ये भी आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा हुआ है। What is the most important drawback of Rutherford's model? Who will parrot it to me? बताओ। All right, so we have a candidate। लक्ष्मी का हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है, that's true, that is also a drawback। Maxwell's law, that's also true। शिवांग could not express, yes आने का।
So ठीक है, let me, Shivang, can I unmute you and can you dictate the statement to me? All right, so let me, तुम अपना हाथ रेज करो एक बार ताकि ऊपर आ जाएगा यहाँ पर. I will be able to, yeah, all right. Yes sir. Great. तो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की जो लॉ कहता है कि बताओ, स्टेटमेंट बताओ. अगर कोई भी चार्ज्ड पार्टिकल मूव कर रहा है तो फिर वो कंटिन्यूअसली एनर्जी को एमिट करता रहेगा. तो फिर अगर रदरफोर्ड्स मॉडल करेक्ट था तो फिर इधर पे भी इलेक्ट्रॉन उसके अराउंड मूव कर रहा है तो एनर्जी को रिलीज करते करते वो स्पाइरल पाथ कवर करके डायरेक्टली न्यूक्लियस में जाके लग जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है. ग्रेट ग्रेट. राइट, सो मैं इसको थोड़ा सा वर्ड्स में लिख देता हूँ. सो देयर वाज दिस थ्योरी called as theory of electromagnetism given by James Clerk Maxwell. ठीक है, it was something which was a path breaking theory of that time. ठीक है, ये ऐसे 1850s में आई थिंक आई थी थ्योरी. 1850s 1870s में आई थिंक, सॉरी 1870s में आई थिंक ये थ्योरी आई थी. एंड दिस वाज समथिंग दैट चेंज्ड द पर्सपेक्टिव ऑफ साइंस. इसके पहले तक इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर एक्चुअली थॉट टू बी टू डिफरेंट प्रॉपर्टीज, and Maxwell actually proved that both are interrelated. Magnetism actually comes from electricity only. Magnetism is not a unique property in itself. It is a manifestation of charge moving in loops and circles. ठीक है, so according to theory of electromagnetism, ठीक है, तो उसको दोनों को कंबाइन करके ही gave the name electromagnetism. According to the theory of electromagnetism by Maxwell, ठीक है, इसमें बहुत सारे कंक्लूजन्स थे. वन ऑफ द कंक्लूजन्स फ्रॉम दिस थ्योरी वाज दैट व्हेन अ चार्ज्ड पार्टिकल accelerates in an electric field, ठीक है, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल क्या हो गया, यहाँ पर आपका चार्ज पार्टिकल हो गया इलेक्ट्रॉन. ठीक है, एंड ये एक्सेलरेट क्यों कर रहा है, बिकॉज ये स्पीड भले ही कांस्टेंट हो सकती है. ठीक है, स्पीड कांस्टेंट हो सकती है बट डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सर्कुलर मोशन है. तो इसकी वजह से वी विल से दैट द वेलोसिटी चेंजेस and there is an angular acceleration associated with it. So a charged particle accelerates in an electric field. किसका electric field? Nucleus का. ठीक है, a charged particle when it accelerates in an electric field, it should continuously, ठीक है, ये भी एक important word था, it should continuously emit energy in form of radiation. ठीक है, so as a result what should happen is that the electron should lose energy and speed. As a result, it should spiral down onto the nucleus. ठीक है, now it should spiral down
on to the nucleus. All right. Now, नहीं नहीं नहीं, न्यूक्लियर कोलैप्स कुछ अलग होता है सुबोध. दैट इज नॉट द सेम थिंग. वो तो आप ऐसे आई थिंक फिजन या फ्यूजन के बारे में बात करोगे. नो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. Okay, now I think everyone is quite aware about this drawback. Now, what I would want you to do is, okay, what I would want you to do or understand is, आप लोगों ने इसके बाद में बोर्स मॉडल ऑफ एटम पढ़ा हुआ है, ठीक है. एंड बोर्स मॉडल ऑफ एटम में द सेम थिंग हैपेंस, ठीक है. दैट न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है. न्यूक्लियस है एंड न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है. बट ये सेम ड्रॉबैक तो वहां पर भी एप्लीकेबल है. हाउ इज इट दैट Bohr's model got accepted whereas Rutherford's model got rejected? ठीक है. So I want you to put some thought to it and ये मत आंसर देना कि बोर ने बस बोल दिया था कि ऐसा. बोर का पोस्टुलेट था कि इलेक्ट्रॉन विल नाइदर गेन नॉर लूज एनर्जी, इट विल मूव इन फिक्स्ड ऑर्बिट्स, ठीक है. But there is something more to it that you should understand before we move to the Bohr's model of atom. Okay. And of course, yeah, there were other drawbacks also from or in the Rutherford's model. Another common one was hydrogen spectrum. तो वो सब क्या है, कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा विद टाइम, धीरे धीरे. अभी के लिए आई विल कीप दिस एट डे, ठीक है. हम लोगों ने अभी ये ड्रॉबैक को समझ लिया है, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे in Bohr's model of atom. But before we move to Bohr's model of atom, what I would want to actually talk about as the next topic is called theory of light. Okay, this is what I want to talk about before we go into the details of Bohr's model, and this is something which will help us do a transition from Rutherford's to Bohr's model as well. ठीक है. So यहाँ पर आप लोग ऑब्जर्व करना our understanding about the theory of light. So let me put forward a introductory paragraph and then I will ask you to watch a video, okay, to help understand more about the theory of light. So यहाँ पर observe करना. Long back, okay, long back, actually it was Newton who had proposed a theory. So an earlier theory about light was proposed by Newton, in which he described that light is made up of particles. Light is made up of particles called, and he gave the name to them also. He called them as a corpuscles.
अभी स्पेलिंग क्या थी? PUSCLES, corpuscles of light. ठीक है, to explain reflection and refraction. ठीक है, so that was the most commonly observed phenomena about light at that point in time. That light की वैसे तो बहुत सारी properties हैं, but one of the most easy to observe and understand properties were of reflection and refraction. So he gave his theory about, you know, these particles are coming and striking, and then they are getting deflected, they are following the laws of motion, and all those things were proposed by Newton. However, okay, you can say in the beginning of 18th century, okay, certain experiments later, certain experiments demonstrated that light shows wave nature. Okay, they demonstrated wave nature of light. That light behaves like a wave and not a particle. And one of the most famous experiment was Young's double slit experiment. Okay, the Young's double slit experiment is again not something जिसका numerical calculation आपसे अभी करवाया जाएगा. ठीक है, दिस इज समथिंग जिसके ऊपर आपको फिजिक्स में क्लास 12th में एक्चुअली न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे. ठीक है, यू विल गेट इनटू मच डेप्थ ऑफ इट. अभी के लिए आई जस्ट वांट यू टू observe this experiment. It's a very simple yet elegant experiment that demonstrates the wave nature of light. Now, in order to understand that, let me share a video with you. This is actually from a very common science channel, Veritasium का आप लोगों ने देखा हो तो. ठीक है, हो सकता है आप लोगों ने, those who are geeks of all kinds, they would be quite aware of this video in the first place. Wait, I'll just share the link with you. There's no option to make a device secure against bad guys, but insecure. What's the difference between blue light and red light? All right. Wait. All right. कहाँ गया everyone? ठीक है, I shared the experiment with everyone on the chat. Go ahead and watch it, and then we will discuss about this in the next class. ठीक है, सबको वीडियो मिल गया है? ठीक है, great. So watch this video and understand about the theory of light. I will it's a 7-minute-ish video, so let that be the ending note of today's class. And next class हमारा I think कल या परसों ही है, so we will pick from here itself. We'll talk about the theory of light, and with that we will be able to actually get into the numericals of this chapter as well. ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा homework and all भी दे पाऊंगा. आज के लिए एक्चुअली कोई होमवर्क नहीं है, बिकॉज जो पढ़ाया है मैंने इट इज ऑल जस्ट इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, so let me close the lecture for the day and watch this video. It's an interesting one, and
आदित्य आपको मिला नहीं क्या लिंक? अरे मैंने एवरीवन पे डाला ना, देखो आपको भेज देता हूँ मैं पर्सनली। किसी और को लिंक नहीं मिला हो तो लेट मी नो, आई जस्ट सेंड इट टू यू। ऑलराइट ग्रेट, ठीक है। तो आप लोग ये वीडियो देखो एंड देन वी विल नहीं नहीं नहीं, 1 मिनट का नहीं है। कौन सा वीडियो देख रहे हो आप यार? वेरितासियम का ये वाला वीडियो नहीं है क्या? लेट मी जस्ट क्लिक। हाँ ये 7 मिनट का है रे, 7 मिनट 39 सेकेंड्स का। लक्ष्मी आप सही वीडियो देख रहे हो ना? यू कैन एक्चुअली पुट ऑन यूट्यूब ओरिजिनल डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एंड ये वेरितासियम चैनल का जो आएगा वो वीडियो देखना, ठीक है? सो वॉच दिस वीडियो एंड वी विल डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो, all right then, take care, let me close the lecture. Thank you guys.